is called Exclusive. Now, what we are doing here on the show is putting our focus on a story that all of you are tracking very, very closely. This is another Tollywood actor who's committed suicide. She was all of 20 years old, but why did she commit suicide? There is an investigation lead in the entire case. We deep dive into that and much more. The headlines first on Top of 6. Co-actor Sheezan is in a 4-day police custody. Actor Tunisha Sharma's uncle alleges that she was being harassed. Even as COVID horror videos continue now to emerge, China now stops publishing their daily COVID data. Day after seen walking in the Bharat Jodo Yatra, Kamal Hassan now triggers a language debate. He says imposing Hindi is ignorant. Vadra Gandhi takes to Twitter insulting Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary as the nation pays homage. Days after clashes in the Tawang sector, China now releases their very first official response. They say we are ready to work with India. And Indian workers attacked along the Nepal border in Uttarakhand, Rajnath says will solve the dispute together. So first up, let's get you more leads on what do we know about the case of the actor Tunisha Sharma committing suicide. Remember, the story has shocked everyone. The actor was all of 20. Now, did she do this because she was in depression? She was actually suffering a certain amount of anxiety as far as her relationship is concerned. The answers for the moment are elusive, but the police is carrying forward the investigation. Now, her co-actor Sheezan, remember, has already been remanded to police custody, but Republic has been able to speak to the uncle of the late actor, who's speaking us and telling us more about what possibly he believes could have been the reason that triggered Tunisha to take this step, and also a word coming in from the lawyer of the accused telling us more of what he plans to do in the case now. क्या तुनिशा ने कभी बताया था कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्यों परेशान है वो? पहले उन दोनों का काफ़ी अच्छा था, चल रहा था जब से टाइम से पिछले 2-3 महीने से, जब से ये शो शुरू हुआ था। लेकिन अभी पिछले 15 दिन पहले, अभी 8-10 दिन पहले तुनिशा को एक एंजाइटी अटैक आया था। तो उसने बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है और ऐसा क्यों कर रहा है वो, यही सब बात हुई। उसके बाद फिर अभी ये अचानक से फिर ये हो गया। यानी कि उसने पहले बताया था आप लोगों को कि उसकी ज़िंदगी में क्या उसने बताया था उसने। क्या कभी ये भी कहा? मम्मी से हर बात शेयर करती थी। उसने बताया था कि उनकी अच्छी दोस्ती है, तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठाना लगता है, पता था कि ऐसा हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ, वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो उसमें आएगा, वो लोग। तो शीज़ान के वकील कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो था वो था, लेकिन ब्रेकअप हो चुका था इस घटना के पहले, तो शीज़ान का कोई दोष नहीं बनता। आपको भी ऐसा लगता है क्या? अब दोष नहीं बनता तो कोई इतना बड़ा अगर कदम उठा रहा है तो उसके साथ क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है अपनी जान देने का, तो कुछ तो हुआ होगा ना। जो पुलिस, देखिए पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, अभी हमें भी नहीं पता क्या हुआ सेट पे। हम लोग सीधा हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे तुनिशा हमें मिली, तो तब तक वो नहीं थी। सेट पर जो लोग काम करते हैं उनका ये कहना था कि भाई तुनिशा बहुत सीरियस थी शीज़ान को लेकर के, उतनी सीरियस शीज़ान नहीं थी उनको लेकर के। क्या आप लोगों ने भी ये महसूस किया? हाँ, मम्मी ने और तुनिशा की मम्मी ने उसको समझाया था कि बेटा अगर ब्रेकअप भी है, जो भी है, पहले तो आप इतना ज़्यादा क्लोज आए, अब अचानक से एकदम से दूर जा रहे हो, तो फिर वो 20 साल की है सिर्फ, तो वो इतनी समझ नहीं है उसमें अभी। तो थोड़ा पहले आप घर बुलाते थे, आपकी मम्मी भी बुलाती, सब बुलाते थे, अब अचानक से क्या हो गया। तो वो इसी स्ट्रेस में थी पिछले 10-15 दिन। शीज़ान ने कारण क्या गिनवाए, क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं?
पता नहीं, आई थिंक उसने बोला मेरी लाइफ में कोई और है पहले से या कुछ, या फिर तुनिशा को कुछ पता चला हो, जो भी, बस वो मुझे इंटरनल नहीं पता। पुलिस अभी उनके चैट्स चेक करेगी, फ़ोन्स चेक करेगी तो पता चलेगा। दोनों के फ़ोन पुलिस के पास ही हैं। एंजाइटी का जो अटैक आया था, फिर कोई ट्रीटमेंट दिया था आप लोगों ने तनीषा को इससे उबरने के लिए? या वो लोग सेट वाले ही, शूटिंग वाले लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम लोग वहाँ गए तो रात तक एडमिट किया था उसको, रात में हम लोग घर ले गए थे। अभी इस मामले को आप लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसको लोग लव जिहाद मान रहे हैं कि शीजान ने जानबूझकर ऐसा किया एक मासूम लड़की के साथ? वो मुझे नहीं पता, बट अगर कोई दोषी है तो उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है अपने लॉ पे। सो वी विल फॉलो द लॉ। Let's also get in our colleague Sandeep, who's tracking every bit of the investigation for us. As you just heard the family there speak up about what possibly could have triggered Tunisha to take this extremely, huge step, but a very, very shocking incident, Sandeep, that's being reported. A girl who's all of 20. She's pretty independent. She's working, she's acting. And just, like that, she commits suicide. What is it that you've been able to gather so far? And what does the police say? They've got his custody, Sheezan's custody for the next 4 days. There's a case of abetment to suicide. What do they say about the possible link here? Do they really believe that there could be a direct relation between the relationship breaking up and Tunisha committing suicide? See, Deepti, yes, it is indeed, on the grounds for the police to investigate this matter, because at this point of time, what we have been, told by the police officials that 15 days ago, Sheezan broke up with Tunisha Sharma, and in fact, she was very much depressed and tense, and in fact, she had got an anxiety attack as well. She was in fact admitted in the hospital as well. Now, apart from that, what is more crucial is that before committing suicide, she had a conversation with Sheezan, the accused, who's been in fact put behind the bars, and in fact has been sent to custody for 4 days. Now she had a conversation for around 15 minutes with Sheezan. What sources inform us that she tried convincing Sheezan, as she was very much in love with Sheezan and very much connected, so she cannot bear the pain of losing Sheezan. And in fact, as the family members of Tunisha also mentioned in the bite, they mentioned that Tunisha used to regularly visit at his home as well, and the family members were very well aware of the relationship. Then what went wrong that Sheezan had to break up with Tunisha? And in fact, for the same reason, the electronic evidences, whether it is the laptop, whether it is the mobile phones, that has been in fact seized by Walev police, and in fact they are in fact examining the WhatsApp chats of Tunisha and Sheezan, and also the chats that she used to do with her close friends as well. So definitely each and every angle has been explored by the Walev police, and in fact it will be very much crucial to see what does Walev police comes out with in the upcoming investigation. Remember, they are just 4 days with Walev police to investigate this matter. So definitely deep questioning of Sheezan will take place, and in fact it will be crucial to see what kind of things does Walev police comes up with. Oh, absolutely, Sandeep. A lot is going to be hinging on that evidence that you just spoke about. Let's do one thing. We'll take forward this conversation with you in just a bit. Earlier in the day, Sandeep has also spoken to the lawyer here of Sheezan, and this is what he says. In fact, all that they're doing, Sandeep, is they say we have nothing to do with this particular case. So we listen into this reaction, and then I just come back to you, Sandeep. तुनिशा शर्मा सुसाइड केस मामले को लेकर के तमाम जो सनसनीखेज चीज़ जो है वो सामने आ रही है। इसी बीच मेरे साथ शेज़ान के लॉयर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, रुपेश जी जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, बताइए कि किस प्रकार का आर्गुमेंट आज कोर्ट में हुआ, क्या कुछ दलीलें जो हैं वो दी गई थी? उनको 7 डेज़ का रिमांड चाहिए था। हमारी तरफ से था कि रिमांड की इतना नेसेसरी नहीं है, जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे चीज़ तो आयोग को प्रोवाइड की गई है।
इसके लिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में और आगे भी करते रहेंगे। पुलिस की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई थी? आरोप लगाया जा रहा है 15 दिन पहले जो है ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद जो है ये कदम फांसी लगाने की जो कदम है वो उसने उठाया। देखिए ये सब केस है, उनका केस है, अब वो इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट आएगा। हम हमारे तरफ से सारा चीज़ें बता रहे हैं। मेरिट्स आपके सामने सबके सामने आएगा, जो सच है वो ऑटोमेटिकली आएगा, रिपोर्ट्स के दौरान आएगी। तो अभी मेरिट्स पे मुझे कहना सही नहीं है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में क्या, कोर्ट में क्या कुछ बातें आप लोगों ने क्या दलील रखी उसके बारे में बताइए। हमने फुल कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो उनको इंक्वायरी चाहिए, जैसा मोबाइल चाहिए, जो डिटेल चाहिए, हमने सब दिया है। हमारी तरफ से कहीं भी हम कम नहीं पड़ रहे हैं। जो आरोप लगाया गया है कि वो हरेस करता था, मारपीट करता था, वो सच है? नहीं, ऐसा कोई परिवार की तरफ से नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा एलिगेशंस पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ना कोई है, और ऐसा कुछ एलिगेशंस पे कोई सवाल भी नहीं हुआ है बेसिकली। बट ये चीज़ सब गलत है। जो भी हमने सब सारा सिचुएशंस कोर्ट के सामने भी रखा, पुलिस स्टेशन में भी रखा हुआ है, और हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं। बाकी रियल फैक्ट आपके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। Also important to hear what the cops have to say in the case and why do they believe that this is also a case of abetment to suicide. Let's listen in to this conversation that our colleague Sandeep has had with the investigators, telling us more exactly on this angle. मेरे साथ इस वक्त नाला सोपारा के एसीपी माननीय चंद्रकांत जाधव जी हैं। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर के इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज 4 दिनों की कस्टडी जो है वो दे दी गई है। एसीपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिली, कैसे जो है पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन? हमें हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिला था, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। बाद में पुलिस ने डेड बॉडी को इंक्वेस्ट पंचनामा करके हॉस्पिटल भिजवाया। मौके वारदात पे आपने क्या क्या देखा, किस तरीके से उसके गले पर निशान था, क्या कुछ आया? हाँ, गले पे तो निशान था, हैंगिंग की वजह से गले पे निशान था, और पोस्टमार्टम हुआ है उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई? अगर आप पोस्टमार्टम में उसका डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है। प्रेगनेंसी की बात कही जा रही है, क्या प्रेगनेंसी को लेकर के ऐसे कुछ सबूत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस मामले में कितने लोगों से पूछताछ की गई है, क्या कुछ कर रही है? पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है वो सीज किए हैं, क्या व्हाट्सएप चैट्स वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करेंगे? नहीं, 2 मोबाइल सीज किए हैं, उनको दोनों के ताबे में है, पुलिस तपास कर रही है। व्हाट्सएप मैसेजेस आप लोग एग्जामिन कर रहे हैं? वो सब करेंगे, जो पुलिस का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन का, वो पूरा करेगी। प्राइमा फेसी आपको क्या लग रहा है? वही तो, उसका ब्रेकअप होने के बाद उसने आत्महत्या कर दी है, ये अभी फिलहाल है। So limited bit of details as far as the investigation goes, but let's go back to Sandeep. Now Sandeep, 2 important things. Do we know of absolutely anything that possibly could have happened on the sets itself that, pushed the actor to take this kind of a step? Are there any eyewitness accounts that we've heard of? And secondly, Parth Zutshi is another co-actor who has been called in for interrogation. Now what do we know about him, and what is the angle that the police possibly could be looking at when they speak to him? See, Dipti, at this point of time, 14 people's statement has been recorded by wildlife police, and in fact, these are the family members of Tunisha and Sheezan. These are the co-workers of Tunisha and Sheezan, and the people who are in fact, who were present at that point of time when this incident took place. Now, everyone's testimony is very much important, although what kind of statement has been given before the police, that has not been revealed yet, as this will be very much early for a police official to speak anything on the statement that has been given. But yes, they mention that Tunisha used to love him. In fact, Tunisha was very much into her love, and she was in fact very much distressed with the fact that Sheezan broke up with Deepthi, and that could be one of the reasons that Tunisha in fact had committed this suicide. But yes, it will be very much early to come to any kind of conclusion. But prima facie, what police has mentioned in the FIR, that
they were in relationship for till last 15 days ago, and in fact 15 days ago they broke up. And in fact, following which she also got anxiety attack, and in fact she was also admitted as well. So these are some of the facts that has been in fact mentioned in the FIR. But yes, it will be, the mystery of Tunisha Sharma will unfold as day passes, as more and more questioning takes place, and the details will soon be revealed after the detailed investigation is carried out. Because remember, there's just been 1 day of investigation so far. Absolutely, Sandeep. A lot of unanswered questions. And, whenever we report on a story like this, you're obviously shocked with how life, becomes fragile, and you have someone who's all of just 20 years old committing suicide. Sandeep, we'll be tracking every bit of investigation on that story, as I thank you right now for piecing together all information. And now to the other big story. Remember, Mathura court on Saturday has passed an order in the Christian Bhumi Shahi Idgah case that a survey now will be conducted on the disputed site. The court has also issued notices to all parties. It said that they have been asked to comply with the court's order. This order, remember, is on the same lines as a Varanasi court that ordered videographic survey of the Gyanvapi Masjid. Now, Republic is on ground zero in Mathura, where we've also spoken to the locals and the parties involved. अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तता मोक्षदायिका। मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी धरती पर चला आ रहा विवाद अब सुलझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका को लेकर कल एक बड़ा फैसला आया और बताया गया कि अब इसका अमीनी द्वारा सर्वे कराया जाएगा। अमीन इसका सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद जो 13.37 एकड़ की जमीन है उसको लेकर एक मानचित्र तैयार किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर कितनी जमीन जो है वो हिंदू पक्ष की है और कितनी मुस्लिम पक्ष की है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रास्ता जो है वो धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस विवाद को सुलझाने की दिशा में अब काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी 20 तारीख का 20 जनवरी डेट तय की गई है अगली सुनवाई की कोर्ट ने, और उस तारीख तक ये जो रिपोर्ट है वो अमीन को वहां पर सर्वे करने के बाद सौंपनी होगी। उसके बाद आगे की प्रक्रियाओं पर काम शुरू होता हुआ नजर आएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस दिशा में जो काम चल रहा है उसमें कितनी मजबूती और नजर आती है, और हिंदू पक्ष के लिहाज से जो कल एक बड़ा फैसला आया है वो आगे किस तरह से और इस केस को मजबूती प्रदान करता है। ये बाल कृष्ण भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण की तरफ से हमने ये रिट दाखिल करी है याचिका, जो दावा जिसका 839 सन 2022 नंबर है, 8 दिसंबर को हमने प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय में। इसमें हमने 3 मांगे रखी हैं। प्रथम मांग तो यह है कि 1967 में एक सूट फाइल हुआ था इस शाही ईदगाह को लेकर, जिसमें कि आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। वो कंप्रोमाइज़ किया गया था श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी के द्वारा, जबकि किसी जन्मस्थान सोसाइटी को कंप्रोमाइज़ करने का कोई अधिकार नहीं था। तो एक तो हमने उसको वॉइड शून्य घोषित कराने के लिए किया है कि वो वॉइड है। दूसरा हमने कहा है कि जो हमारी भूमि पर ठाकुर जी की पे जो शाही ईदगाह अवैध निर्माण बना हुआ है इसको डमोलिश करके हमारे पोजेशन में दिलाया जाए। और तीसरा हमने इसमें कहा है कि जब तक ये सूट चले पेंडिंग है उस दौरान वहाँ की मौके की स्थिति को यथास्थिति में रखा जाए, उसमें कोई इंजंक्शन ग्रांट किया जाए। कोर्ट ने विस्तार से हमारी आर्गूमेंट सुने, सारी बातें सुनी। उसमें उन्होंने एक पक्षीय इंजंक्शन देने से तो इनकार किया, कहा कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। विपक्ष को नोटिस जारी किए सभी को, और हमारी जो एक अमीन की एप्लीकेशन दी कि मौके का निरीक्षण करके माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, मैं नक्शा उपस्थित करे, उसको स्वीकार किया कि ये आपकी सही है, इसको हम न मंगा सकते हैं। तो माननीय न्यायालय ने वो आदेश पारित किया कि मौके का निरीक्षण करके अगली तिथि तक माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत करें। अच्छा, जो 68 वाला आप लोगों ने लगाया था उसको लेकर कोर्ट ने कुछ कहा? अभी नहीं, ये तो एक साक्ष्य का विषय है। ये दोनों विपक्ष अपना प्रस्तुत करेगा, एतराज जवाब, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट होंगी, जब ये निर्णय की बात है आगे उसमें समय लगेगा। अब ये जो अमीन सर्वे है वो किस तरह से होगा और उससे फिर क्या लाभ होगा? अमीन सर्वे में अमीन जो मौके के निरीक्षण में पूरी जितनी भी जानकारियाँ हमें मिलेंगी उन सबको चिन्हित करके लेके आएंगे, और नक्शे के समय माननीय न्यायालय में
प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि दौरानवाद किसी भी रूप में स्वरूप का परिवर्तन प्रॉपर्टी का ना हो सके। ये एक आवश्यक है, न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, मेरा यही सबसे निवेदन है। जो ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था उससे ये कितना भिन्न है? और एक और बड़ी चीज़ की, क्या इसमें भी कोई एक टीम बनाई जाएगी, एक बड़ा ग्रुप होगा जो सर्वे करने के लिए जाएगा? अभी तो माननीय न्यायालय ने सिर्फ अमीन महोदय को ही निर्देशित किया है। माननीय न्यायालय चाहती है तो अगर ऐसा कुछ समझेगी तो इसमें आगे अपने आदेश को किसी भी प्रकार से और तब्दील करके आगे कर सकती है। कितने लोगों की टीम होगी? अभी तो अमीन महोदय हैं, उनके संग उनके व्यक्ति रहते हैं, बाकी वादी प्रतिवादी पक्षों को सूचित करके उनको साथ वो लेके जाएंगे। ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ था उससे ये कितना भिन्न रहने वाला है? ज्ञानव्यापी के सर्वे के लिए एक विशेष है, कुछ चीज़ों को चिन्हित करके उन्होंने एप्लीकेशन लगाई गई थी कि यहाँ पे ये चीज़ें हिंदू साम्राज्य पुरानी मौजूद हैं, उसके लिए विशेष करा गया था। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ मौके की स्थिति को लाने के लिए कहा गया है कि इस समय वर्तमान में जो मौके की स्थिति है वो माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत करेगा। इससे केस में कितनी मजबूती मिलेगी? केस में बहुत मजबूती मिलेगी, दोनों ही पक्षों को इसमें अच्छा है कि ये तो उनकी साक्ष्य के द्वारा बहुत आगे जाके निर्णित होना है, क्या ओनरशिप का डिस्प्यूट है, तो इस समय दोनों पक्षों को एक मौके की स्थिति लाने में कैसी भी आपत्ति किसी ना हमको ना विपक्ष को होनी चाहिए, और इसमें माननीय न्यायालय को भी बहुत सुगमता प्राप्त होगी न्याय करने में, और दोनों पक्षों को भी रहेगी। अंतिम सवाल, ये सर्वे कब से शुरू हो सकता है? अभी अभिषेक जी अवकाश चल रहा है, 2 तारीख को न्याय खुलेगा। न्यायालय खुलने के बाद अमीन महोदय हमको दिनांक देंगे किस दिन जाना है, ये उसी के बाद ही निश्चित हो पाएगा। एक दिन में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या 2-3 दिन लग सकते हैं? ये वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से ही बताया जा सकता है। अगर वहाँ पे समय लगेगा तो समय दिया भी जाएगा। अच्छा, जो प्रतिवादी पक्ष है अगर उसकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती है तो सर्वे हो पाएगा या फिर उसमें भी कोई एक क्लॉज रहता है, ऐसा कुछ? वैसे तो प्रतिवादी पक्षों को किसी प्रकार की आपत्ति होनी नहीं चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय का सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की, सबको स्वतंत्र अधिकार है, वो किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र देके अपील रिवीजन जो चाहें कर सकते हैं। इस मामले को लेकर कि लगभग 15 मुकदमे पेंडिंग है और सिविल जज सीनियर डिवीजन से लेकर तमाम कोर्टों में ये चल रहे हैं, और मथुरा जनपद की जो सबसे बड़ी अदालत है जिला जज साहब के यहाँ, उनकी अभी इस तरह के मामले चल रहे हैं। किसी भी अदालत ने जब भी मुकदमे फाइल हुए, पहले रेस्पोंडेंट को, जो भी उन्होंने पार्टी बनाई, उन सबको नोटिस जारी किया। यहाँ बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 8 दिसंबर को एक केस फाइल किया गया, और वहाँ नियम अनुसार हमको नोटिस जारी होने थे, हमें नोटिस मिलते तो हम आ जाते। 8 तारीख को ही बताते हैं कि आदेश कर दिया कि था अमीन वहाँ जाएं और मौके का निरीक्षण करें, और उस 8 तारीख के आदेश को छुपा के रखा गया, और 24 तारीख को एक समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ कि था वो अमीन रिपोर्ट के आदेश हो गए। बल्कि समाचार पत्र ने तो और ज़्यादा लिख दिया, उन्होंने सर्वे क्या लिख दिया, जबकि सर्वे की उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, भ्रम की स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी। लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि ये आदेश हुआ है, तो चूंकि अब न्यायालय बंद हो चुके हैं, कोर्ट बंद हो चुके हैं, 2 तारीख को खुलेंगे, तो 2 तारीख को हम अपना पक्ष रखेंगे। इस ऑर्डर को रिकॉल कराने के लिए, स्टे कराने के लिए जो विधिक प्रक्रिया होगी, जो कानूनन लीगली स्टेप होंगे, वो हम लोग लेंगे। दिक्कत क्या है? अगर अमीन वहाँ सर्वे करता भी है, जांच भी करता है और रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए 2 चीज़ है। पहले जिन्होंने मुकदमा दायर किया, पहले वो तो साबित करें वो उनको मुकदमा दायर करने का अधिकार है या नहीं, उन्होंने किस अधिकार के तहत मुकदमा दायर किया है। ना तो वो 13 एकड़ से मुकदमा तो कोई भी हो, किसी को भी अधिकार है, कोर्ट ने दिया है कानून में ये अधिकार है कि अगर मैं चाहूँ तो किसी भी मसले को लेकर मुकदमा दायर कर सकता। नहीं, उसके लिए आपको मैं वही कह रहा हूँ मित्र, 7 Rule 11 CPC का एक प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये होल्ड किया है कि पहले मुकदमे में कोई कार्रवाई होने से पहले ये तय हो जाना चाहिए, 7 Rule 11 CPC के तहत सुनवाई चलती है उसमें, क्या ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, पहले ये तो तय हो जाए। और जो न्यायालय सुन रही है, 15 मुकदमों की सुनवाई चल रही है, उनमें 7 Rule 11 CPC पे 2.5 साल से सुनवाई चल रही है। उनमें भी इन्होंने अमीन रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले इन पर सुनवाई हो जाए। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ, 13 एकड़ 37 डेसिमल लैंड का उन्होंने दावा किया, ना तो वो उसके ऑनर हैं, ना वो उनके पूर्वज उसके ऑनर रहे हैं, उनकी सीमाएं क्या है, चौहद्दी क्या, और उसके लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दाखिल नहीं किया। भाई आप कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दाखिल करोगे कि आप फला व्यक्ति हैं, आपको ये राइट है, ना वो जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना वो पदाधिकारी हैं, तो उनका तो कोई राइट नहीं है। जैसे जिस तरह पहले एक मुकदमा आया था बाहरी लोगों के द्वारा और पहले दिन ही खारिज हो गया था, वो न्यायालय ने यही तो देखा कि भाई आपको क्या राइट है,
तो यहाँ भी ये देखा जाना था, लेकिन जब चूंकि किस स्थिति में नोटिस जारी हुआ है, वो तो 2 तारीख को खुलने का रिपोर्ट का आदेश हुआ है, वो तो 2 तारीख को जब कोर्ट खुलेंगी उसके पश्चात ही वहाँ पर पक्ष रखें। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि क्या प्रतिवादी पक्ष को इससे कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? अगर अमीन वहां पर जाता है, मौका मुआयना करता है, सर्वे करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? उससे तो और मजबूती आएगी आप लोगों को। मेरा सवाल ये कि पहले विधिक प्रक्रिया तो पूरी हो, हमको सुना तो जाए, पहले हमारे तर्क तो सुने जाएं। बिना सुने हमारी आपत्ति ये भी तो है कि बहना हमको सुनोगे, आप आदेश पारित कर देंगे, तो ये तो इलीगल आदेश हो गया ना। एक ऐसा मामला जहाँ या तो ये पहला मामला होता या पहला दावा दायर हुआ होता, ये इसमें ये आदेश होता, जहाँ 15 के लगभग ऑलरेडी मुकदमे थे, जहाँ 5 खारिज हो चुके हैं और अभी भी 1-2 और नए आए हैं, उन सब में न्यायालय ने नोटिस जारी किए। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं है, ना उन मुकदमों को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। पहले ये तय तो हो जाए, इतनी जल्दी क्यों? और 8 तारीख को ही आपने दायर किया, 8 को ये आदेश, तो ये कई सवाल उत्पन्न होते हैं ना कि 8 तारीख को फाइल करने के साथ ही एक आदेश, एक फाइल मुकदमा हुआ, उसके लिए आप इशू नोटिस करेंगे, जो प्रोसीजर है। अगर इशू नोटिस होते और हम लोग नहीं पहुंचे तो उनको अधिकार था कर। So you've heard the reactions coming in from both sides. The crucial question is, when the court has ordered for a survey, who's politicizing this? We'll track that story very, very closely. Remember, in January is when this case is now going to be reheard. We quickly head into a break right now, but when we come back, our spotlight is on what really is China hiding. Because all of a sudden, remember, China has stopped publishing the daily COVID numbers. What really does that mean? All details when we come back. And also, just a day after he was seen walking in the Bharat Jodo Yatra, Kamal Hassan now triggers a big language debate. He says imposing Hindi is ignorant. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. अब जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में होम एंड किचन एसेंशियल्स पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। A very good evening, viewers. You're watching Republic TV, India's #1 news channel. I'm Shivangi Shukla. The top story that we have for you right now is that China has stopped publishing the country's reported cases on a daily basis after the deadly COVID-19 cases and infections. That's the top story. We'll get you more on that. But first, the headlines we are tracking right now.
Even as COVID horror videos continues to emerge, China stops publishing daily COVID data. Day after scene walking in Barajoro, Kamal Hassan now triggers a language debate, says imposing Hindi is ignorant. Vadra Gandhi A takes to Twitter and serves Vajpayee on his birth anniversary as the nation pays homage. Co-actor Sheezan in 4-day police custody. Actor Tunisha Sharma's uncle alleges Tunisha was being harassed. Days after clashes in Tawang sector, China releases first official response, says ready to work with India. Indian workers attacked along the Nepal border in Uttarakhand. Rajnath says will resolve the dispute together. Viewers, on to our top story. Amid global COVID upsurge, China stops publishing daily COVID cases and amid fresh surge. China's National Health Commission, which used to issue the country's COVID-19 case figures on a daily basis, starting Sunday, stopped publishing the update, according to the Global Times. The move comes in the backdrop of a Radio Free Asia report that nearly 250 million people in China may have been affected by the COVID-19 in just 20 days after the zero COVID policy was diluted in the first week of the month, viewers. So right now, viewers, big story coming in as China is blacking out the data on COVID, as many cases of COVID are reported there. China's National Health Commission is stopping daily COVID-19 case data from today itself. Instead, the Chinese Center for Disease Control and Prevention will release COVID info only for study and reference. And this is coming in as China's COVID surge is raising a global alarm all over the world, viewers, and even India is taking precautionary measures. All right, let's have a look at what's happening in China, where you can see very, very clearly that funeral homes are running out of space. Dead bodies are kept in parking lot. That's the amount of cases being reported in China. Crematoriums too are piling up with dead bodies. The elderly in China being regarded as the most vulnerable, as BF.7, a subvariant of Omicron, wreaks havoc across the country. Right, and have a look at this video where containers are being used to transport bodies which are piling up amid the massive surge. Just how those dead bodies are being piled up in containers, it really shows that things are getting out of hand in China. In China, viewers, it's a worsening situation in China. All right, this is a fresh video on your screen once more, where you're seeing unprecedented COVID horror, where dead bodies are piling up amid the massive surge. You can see that these dead bodies have been covered, but it's very, very clear, viewers, that how China is not being able to control what's happening there when it comes to COVID-19 cases. It's a big chaos in China, and at this time, when things are getting out of hand, this is the time that China has chosen to stop publishing the country's reported cases on a daily basis. So we are seeing that, the big question right now that we are also asking on Republic TV is, what is China trying to do and cover the COVID truth? What's the point of covering the COVID truth? All right, this is a fresh new video on your screen as well, where you can see that a mosque that is being used to keep the bodies. A mosque is being used to keep the bodies, and the dead bodies are piling up there as well. Now, this video has been circulated on social media, where, viewers, it's very, very clear, and the big question is also being raised, and why is China trying to do a COVID cover-up at this point of time, as BF.7 subvariant is causing chaos. At the same time, India is making sure that every precaution is being taken from the national to the state level to avoid the spread of COVID-19 in the country, viewers. So these are the visuals, very shocking visuals also coming in from China. And like we just told you, is that, the China situation is becoming a cause of concern across the world, and the WHO itself has expressed
the concern for China. WHO is very concerned over the evolving situation in China with increasing reports of severe diseases. That's what WHO Director General has said as well, viewers. So we're seeing these visuals come in where China is clearly on a back foot right now. There's been a rapid surge in COVID cases, which has severely, I repeat, severely impacted the hospitals in Beijing and other main cities. The cases have posed an unprecedented challenge for medical workers as well. I'm being joined right now by our senior editor, Deepthi. Deepthi, a very good evening to you. Now, what our viewers are watching on the screen is complete chaos, hospitals full of bodies, China not being able to make sure that they contain the situation. At the same time, what's even more alarming is that China has stopped publishing daily COVID cases. That's very, very alarming right now, Deepthi. Yes, you know, Shivangi, I could hear your question, but I've understood the larger gist of it. The point is just one look at these images will terrify you. You look at what's happening in China, this will scare you. The reason why today the world is scared. The world is scared that is China today not just hiding the real numbers, is China right now just sitting on the verge of a COVID explosion, an explosion that possibly could, lead to a new mutation, possibly a new virus, and then you have the entire world getting affected with it? Or what is China doing? The last we checked, the last numbers that China released, Shivangi, are on Friday. Since Friday, China not releasing its official COVID numbers. Now, why? Does this mean it's getting really difficult for China, Beijing now to tell the world that these are real numbers? Just about 2 days ago, I recall, leading a lot of reports, there is also an internal government report that has been leaked. And on your screen, you're actually looking at more details. So why what is happening in China today is being watched the world over. The world today very, very concerned with these images where you have containers used to transport bodies. We've seen funeral homes that are overwhelmed. We've seen people being administered, being treated on the footpath, on the roads, on absolutely any space that they can right now find for themselves. This is a horrific situation. This is COVID horror. We've all seen the cycle. We've all seen the first, second, the third waves the world over. A lot of countries today have moved to a post-COVID normal life. But one negligence on bit of China and we could be standing again at that very same step where we stood 3 years ago. It was December. It was December exactly 3 years ago where you had seen China concealing numbers, concealing data, not even speaking to the World Health Organization and sharing the data with them in real time. So I think the WHO must step in here. The WHO needs to act, sooner rather than later, unless and until we want the entire cycle to be replayed. I also say it's an explosion because look at these numbers, 5,000 estimated deaths per day, millions possibly who've been affected in just a gap of about the last 15 days. People do not have medicines. People do not have essential items. People are on the streets. And Beijing, it seems, is shutting doors to all kind of information. And extremely important, like I said, that you have an agency like the WHO that steps in here.